हे गाइस, स्वागत है आप लोग का वापस सोच आलय में। मेरा नाम जेरी और मेरे साथ हैं विशाल। आज हम हाय गाइस। एक नए वीडियो पे अपना सोच और विचार रखने वाले हैं। अपने शौचालय से थोड़ा सोच निकालेंगे एंड यहाँ बांटेंगे। अगर आपका भी कुछ हो सोच तो हमारे साथ शेयर करिए। आज के वीडियो का नाम है US deploys 5 aircraft carriers to challenge China। भाई चाइना को धमकी दे रहा है यूएस। इलेक्शन पास में है यूएसए में। अब उनको हाँ, भी अपना कुछ शो करना है गवर्नमेंट को कि भैया हम धमकी दे सकते हैं। तो शायद उसी लिए चाइना को अभी धमकी दे रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से तो ये बस बोलते थे कि हम कुछ करेंगे कुछ करेंगे। हाँ, अभी लेट्स सी कि इन्होंने कितनी पास गए हैं या क्या कर रहे हैं। अभी लेट्स सी। लेट्स सी। Carriers are too many aircraft carriers. In your enemy's backyard, even one. But tell that to the United States. Washington is deploying 5 carriers to the Western Pacific. It's an unprecedented move. The US has a total of 11 carriers. So almost half of them will be in the Western Pacific, 5 out of 11. Let's look at the warships first. USS Carl Vinson is deployed in Guam. The USS Theodore Roosevelt is deployed in Hawaii. The USS Ronald Reagan is in Japan, and 2 others are en route. The USS Abraham Lincoln and the USS George Washington. Like I said, it's unprecedented. The US has never deployed more than 3 carriers in the Western Pacific. So why now? To send a message. Washington is involved in 2 wars right now, Ukraine and Gaza. Both are largely funded by the US, but the money has dried up. The US Congress is holding up Joe Biden's aid request. How much money are we talking about? More than $95 billion. It includes aid for Ukraine, Israel, and Taiwan, but chances are it won't be passed. So questions are being asked. Is the United States a reliable partner anymore? Can they depend on Washington to defend them? It's a major worry for East Asia. Countries there have 2 challenges. One is Chinese extremism, the other is North Korea's missile tests. So what does Joe Biden do? He flexes his military muscle. 5 aircraft carriers is a lot of firepower because carriers do not travel alone. They are flanked by destroyers, frigates, and patrol boats. So multiply that by 5. Biden is basically telling China, do not get ideas. But will it be enough? I doubt it. Warships and aid are not direct substitutes. Just ask the leaders of the Pacific Islands. 3 of them have written a letter to American lawmakers: Micronesia, Marshall Islands, and Palau. They've together written a letter. Last year, they renewed a deal with the US. Washington would give aid. In return, they would get exclusive access to key regions. That was the deal. Just one problem, though. The aid has not come through. Around $2.3 billion has to be paid. This money has been clubbed with a $95 billion package. So this money too is on hold, and the Pacific leaders are not happy about that. Listen to what Palau's president wrote. Every day the aid is not approved plays into the hands of the Chinese Communist Party and the leaders here who want to accept its seemingly attractive economic offers at the cost of shifting alliances, beginning with sacrificing Taiwan. The Marshall Islands president had a similar warning. I'm quoting again. Further delay threatens to undermine confidence in the US and to encourage some to agree to PRC enticements. That's a very clear warning. Give us aid or we may switch sides. In China, of course, there is no Congress. If the Communist Party decides, payments can be fast-tracked. So aircraft carriers won't really help Joe Biden, at least not with the Pacific Islands. You need a checkbook here, not a hammer. Elsewhere, though, a hammer could work, like in the South China Sea. A standoff is brewing between China and the Philippines. On Sunday, Chinese ships blocked Filipino vessels. Manila claimed their boats were tailed 40 times. In response, they deployed a warship. Then yesterday, another incident was reported. China claimed to have expelled a Filipino fishing vessel. Apparently, it was in Chinese waters. Such reports have become frequent. It has led to worries of a looming showdown. And if that happens, the US could get dragged in. You see, Washington has a mutual defense treaty with Manila. It says they will support each other if attacked.
The US also has such treaties with Japan and South Korea. Both countries face threats from Kim Jong-un, hence the 5 carriers. It's basically Joe Biden's way of saying that he is not overstretched, that despite 2 wars, he can handle China. But like we said in the Indo-Pacific, the hammer alone won't work. Biden will need to use America's vast economic wealth as well. That is, if Congress lets him. क्या लगता है भाई, क्या ये वॉरशिप चाइना को धमकी दे पाएंगी? धमकी तो दे दिया है, लेकिन ये है कि जो धमकी दिया है वो चाइना के सामने रुक पाएगी, और क्या चाइना का क्या उस पर रिएक्शन रहता है। रिएक्शन होगा, ये चाइना का रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात तो वो है, आफ्टर दैट, क्योंकि वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, दे नीड मनी, उनके पास तो कोई ज्यादा सोर्स है नहीं। सो इफ उनको ये एड नहीं मिलेगा, देन उनके पास कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है, दे विल गो विद चाइना। ऑन दैट सिनेरियो, ताइवान को जो सपोर्ट था फ्रॉम सपोर्टिव आइलैंड्स, वो कम हो जाएगा। सो इट विल बी अ जियो पॉलिटिकली विन फॉर चाइना। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे फिर टेंशन बढ़ जाएगी, बढ़नी नहीं चाहिए, बट अगर ये टेंशन बढ़ जाती देन अगेन हमारा मार्केट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये दोनों थोड़े ह्यूज बिग कंट्रीज हैं, तो इट कैन Big ऑल्सो countries, yes. कॉज अदर थिंग्स लाइक वॉर। Yes. तो and नॉट स्पेशली वॉर, बट हाँ, देयर विल बी सम टेंशन, क्योंकि अभी ना चाइना वॉर चाहेगा ना अमेरिका वॉर चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी 2 जगह उलझा हुआ है, और चाइना की इकोनॉमी अभी स्टेबल हो गई, मतलब पहले बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, अब थोड़ी रुक गई है। अगर चाइना अभी वॉर करता है तो उसकी इकोनॉमी डाउन चली जाए, एंड दैट चाइना डोंट वांट कि उसकी इकोनॉमी डाउन जाए, तो अभी वो चाइना होल्ड करेगा, बट लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते, कौन कब पागल हो जाए, देखो। लेट्स सी। अभी के लिए गाइस इतना ही। अच्छा, हमारा एक और चैनल है, दैट इज मैड रिएक्शन, ऑन विच हम म्यूजिक, आर्ट एंड डांस, अलग अलग वर्ल्ड वाइड, अलग अलग कंट्रीज के को हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। प्लीज उस चैनल पे एक बार चाहिए, वॉच कीजिए, बहुत इंजॉय करेंगे आप, हम भी बहुत इंजॉय करते हैं। फॉर दिस चैनल एज ऑफ नाउ, एग्जैक्टली, इस चैनल के लिए भी आप कुछ सजेस्ट कीजिए, एज द चैनल नेम सजेस्ट, सोच आलय। We just want to review some videos so that we can all gain knowledge all together, sitting at one place and understand what's going on around the country, world affairs and other things as well. जो भी चीज़ हो, अगर आपने कुछ नया देखा हो, let us know, and बाकी हम अपने end से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं to find out various things to bring it to you guys and give our reaction and reviews. हम अपना सोच भी आपके सामने रख रहे हैं, और आइए सोच वापस आलय। सोच आलय। जय हिंद, मिलते हैं हम। जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय।